Yes, yes, Kritika. Ma'am, may I read? Just a minute. Kritika, you raise your Ma'am, hand. yes. Yes, beta. Ma'am, create a web page. Named. Create a web page named my teachers. Second. Set the top margin and left margin of the web page at 50 each. Okay. Which tag will be used to set the top margin and left margin? Which tag and which attribute will be used for this? Which tag and which attribute will be used for setting the top margin and left margin? Top margin and left margin कौन से tag या कौन से attribute से set होगा? Yes, Pragati. Okay. Kritika, you are typing. Body tag. Body tag. And which attributes? And body tag or left margin margin. attribute. Top margin. Okay. Next instruction is set the background color. Ma'am, your voice is not Your audible. voice is lagging. Okay. Your Set voice the is not audible. okay, just wait, beta, just wait. Maybe some internet issue is there, but from my side it is proper. Okay. Set the background color of the web page to pink. Which tag and which attribute? Body BG color. Again body tag. color. That means we are using Body three BG attributes color. of body tag. 3 attributes of body tag. Okay. So we will write body BG color equals to pink. Everyone note down this coding in your rough notebooks so that you can revise it later on for your practical exam. Now top margin equals to 50, left margin equals to 50 without any space. टॉप मार्जिन लेफ्ट मार्जिन सिंगल वर्ड है, यहां एक स्पेस आएगी, ठीक है. आफ्टर दिस 50 के बाद एक स्पेस होगी. देन लेफ्ट मार्जिन सिंगल वर्ड है, इसमें कोई स्पेस नहीं है. देन विदाउट स्पेस ब्रैकेट क्लोज होगी. ओके, दिस इज द फर्स्ट. आफ्टर दैट इट इज सेइंग write the names of any 6 teachers by using 6 different heading levels. 6 names with different heading level. Every time different heading level. Which tag will be used? Yes. Ma'am, H tag. H1 yeah, tag. H1, H2, H3, H4, H5 and H6. Now choose different colors for every name. And also change the alignment of headings after every 2 headings. That means first 2 headings will be left aligned. Second 2 headings, second 2 names will be center aligned. Third, next 5 and 6 will be right aligned. And color every time change होगा. Color change करने के लिए कौन सा tag? Font tag. Font tag. So font के लिए we are using only one attribute, that is color. Every time color will be different. So font color equals to, suppose I am giving red for the first name, then we are having heading 1 H1, align equals to left. Whether we write it or whether we don't write it, it doesn't matter because by default it is left. Okay, H1 align equals to left. Give the first name. What name you want to type? Yes, anyone? Okay, suppose I am typing here. Close H1 tag. Then it is saying different font color for second name. So that means I have to close the font tag here because this color should be applied only to this first name. Okay. After that, I'm going to close the font tag and now I want to have another name with another color. Now again second color, again I will start with font tag, color equals to, give some another name. I'm using here blue. Now H1 हो गया. Now second name with different heading level.
H2. H2. H2 Again, is align equals align to is left. equals to left. Give some another name. John Macpherson. Huh? John Macpherson. Okay. Close H2. Heading double close हो गया. And again close font tag. Again close font tag. Now I want to have another name with different color. So what I will do? I will repeat this coding again. Yes, Amarjot, what will I do? Which tag I should write now? Yes, Amarjot, Sarthak, anyone? Can you give Font tag. answer? Font tag. Font tag. Font. Okay, again I will start with font tag. Give color. Suppose I am giving here now yellow. You can use the color codes also. I told you to use the color codes. Now H, which level? H3. H3. Align. After every two names, alignment should be changed. Align is equals to Equal right. to right. Okay, either right or either center. Align equals to center. Okay, give the name. Any name? Joey. Close H3. Then again close font tag. Are you writing the coding? Write coding in your rough notebooks. Note Yes. down the coding. Okay. Now I want to type the fourth name. Fourth name. I'm going to rub the coding from the top. Font color is equals to black. Okay. Again, font color equals to, suppose I'm taking brown. Now, heading level, H4. H4. Align equals to Right. center. 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 Now give a name. Close H4 and then close font tag. 4 हो गए. Same way repeat 5. Font color equals to, give any color. Green. Okay, green रह गया. Now H5 align equals to, अब कौन सी alignment आएगी? 2 बार center हो गया. Right. 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 Okay, now it is right. Close H5 and then close font tag. Okay, first of all, give the font color. Color of attribute of font tag we are using, giving the color. Then we are using the heading level H5, giving the alignment, align equals to right, close bracket, give a name, then close H5 because I want to apply H5 attribute, H5 level only to one name. After writing the name, close H5, again close font tag because I want to apply this color only to this name. After writing this name, I am closing the font tag. Hanji, Sarthak, Ishan, is it clear? Sarthak, any doubt? Okay, Ishan, will you be able to do this in the practical exam? Jayant, Yes. Prabjot,
बेटा Yes, किसी को ma'am. कोई डाउट है अभी क्लियर कर लो, बिकॉज यू विल हैव योर एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम। आपको इस तरह से कोई भी कोडिंग आए तो यू शुड बी एबल टू डू इट। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इट इन द क्लास। ओके, लास्ट नेम, font color equals to green. Now which heading level? Anyone? At 6. At 6. At 6. Align equals to Right. right. Then give a name. Close H6. Then close font tag. And last, close body tag. हाँ जी, जब जी चाहत क्लियर है बच्चे? ओके, नोट डाउन हो गया? यस, नोट डाउन हो गया Yes, ma'am. सबका? ओके, नाउ Ma'am, yes. पेज नंबर Yes, ma'am. 123. Page number 123. One web page is given. Create a web page named success. Okay, this create a web page named my teachers. Name कहाँ आएगा? Title में. Title bar. Title में, title bar पे. So we will give that in head tags. Before HTML, head, title, my teachers, then close title, close head, then start body. Okay, similarly here we are creating a page named success. Choose the title success for the web page. Name can be given in the name as a when you save as the file. When you save the file, you can give a name my teachers, or second page you can give the name as success. Okay, now read the instructions one by one for the second page. Page number 123 सार्थक. First जो हमने किया that was on page number 122. Now page that we are doing that is on page number 123 success. A yellow color में एक web page बना हुआ है, check करो. Got it? Okay. Now create a web page named success. Choose the title success for web page. Title है तो title HTML to start the web page. Head tag for header section, title, success, then close title tag. Please note down the coding everyone side by side. Note down the coding. This will help you to revise for your practical exam. See how to write the coding. Then close head tag. Then start body tag. Now for body tag, set the background color of the page to orange. Yes, Jayant, क्या आएगा बेटा? Jayant, please unmute yourself and give answer. क्या आएगा? Ma'am, may I? नहीं बच्चे, बाकी के बच्चे क्लास में जो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, they will write. They will say the answer. Yes, Anik, क्या आएगा बेटा? Anik, unmute yourself. Tushar. Yes. Tushar, Manmeet, Navkaran. Okay, Somil. That means rest of the Ma'am, BG are still not attending the class. Yes, beta. Ma'am, body BG color is BG equal color. to BG color attribute of body tag equals to orange. orange. The name of the color. Now next is enter the text in the web page using pre-tag as shown in the picture. Choose the font size 7 for the text success, font face impact and font color green.
सक्सेस लिखना है, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द वेब पेज यूजिंग द फॉन्ट साइज 7, कलर green and face impact. Which tag will be used here? Font tag and center tag. Font tag and center tag. Okay. So I think rest of the text is also in the center. So I'm going to start the center tag in the beginning. We will close this tag at the end because every text is, all the text is in the center. So I'm going to start with the center tag. Then I will type all the text, then close the center tag at the last. Now font tag. Which attribute of font tag will be used? Yes, Avdi? Size. Avdi? Chahat? And font size Font size. Size equals to 7. 7. Or Face is equal to And impact. then face is equals to Comic Sans face is MS. equal to impact. Then Color is equal to green. color equals to green. Double U quotes, tag. close. Now underline we have, very good, U tag. Okay, U tag. Then type the word success. Now close the tags which we are not going to apply for the next text. कौन सा नहीं apply कर रहे हैं? U tag. U tag. Font Font tag. tag. ठीक है, so these two tags will be closed here after typing the text. Now next is choose the font size 5, face Comic Sans, color blue for the subheading such as plan, listen, etc. Plan, listen, study, prepare, act. All these words will be of size 5, face Comic Sans and color blue. And जो white color में line आ रही है, while others are playing, that is for font size 4, face Lucida console and font color white. Okay, so every time we are changing the font and giving the text. So हाँ जी. for heading के लिए क्या आएगा? हेडिंग जो आप सब हेडिंग प्लान ले रहे हैं उसके लिए साइज 5 है, फेस कॉमिक सेंस है, कलर ब्लू है. क्या लिखे? कौन सा टैग यूज करें? Font tag. Font tag. Again, Font tag. font tag. Font size equals to 5. Okay. Face attribute equals to Comic Sans MS. Then color equals to blue. Now type the text. किस टेक्स्ट को अप्लाई करना है? Plan. After using this, what should I do? After typing plan, what should I do? Close the font tag. Close the font Font tag. tag. ठीक है. Now for typing the line, जो line type करनी है while others are playing, उसके लिए font size 4, face Lucida console, color white. BR tag. Okay, first of all BR tag, very good. तो BR tag बेटा यहाँ भी लगेगा, पहले भी लगेगा सक्सेस के बाद और फिर प्लान के बाद. Okay, good. Now again font size equals to 4, color equals to white and face equals to Lucida console. Now type the text. Text क्या है? While others are playing. While others are playing. Now after that
Now, whatever size, color and font we had chosen by using the font tag, size attribute, color attribute and face attribute, we had applied these attributes or applied this formatting to this text while others are playing. Okay? And after that, close the font tag. Close the font tag. After that, we can give the new formatting. ये फॉर्मेटिंग सिर्फ इतने टेक्स्ट को अप्लाई होनी चाहिए, उसके बाद मैंने टैग क्लोज कर दिया. दिस फॉन्ट फॉर्मेटिंग विल नॉट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टेक्स्ट. सिमिलरली यहाँ पर जब हमने किया था फॉन्ट साइज 7, फेस इंपैक्ट, कलर ग्रीन, अंडरलाइन, ठीक है, अप्लाई टू सक्सेस, इसको अप्लाई किया. यूज द टैग्स, ओपनिंग टैग्स, apply the attributes, again use the opening tag, whatever information you need, then type the text to which you want to apply these attributes, then close the tag so that this attribute will not continue with the next text. Close कर दिया, दोबारा से नया font दे दिया, फिर close कर दिया, फिर दोबारा नया font दे दिया for every line. Clear है यहाँ तक? मैम इस लाइन के बाद बीआर नहीं आना? आएगा, सबके बाद आएगा, हर टैग के बाद आएगा बीआर. बीआर इज एन एम्प्टी टैग. इट विल बी देयर आफ्टर एवरी लाइन बिकॉज एवरी लाइन इज इन द सेपरेट लाइन. हर लाइन जो वेब पेज पे आ रही है वो अलग लाइन में आ रही है. हाँ जी, ख्याति, हरिओम, इज इट क्लियर? Any doubt to anyone? Please ask in the class because you are No. going to have your this practical exam. it's clear. Practical exam में ये coding करनी है, ठीक है? Okay. Now you will tell me the coding for the next line. Listen. Listen लिखना है. कैसे लिखेंगे? क्या use करें? Font tag. Font tag. Font tag. Now which attribute? Size कितना है? Size is equal to Size 7. 4. Size equals to 5. और क्या use करना है? और क्या यूज करना है? सेम एट्रीब्यूट जो प्लान को अप्लाई किए थे. प्लान हमारा 5 साइज में था, कलर ब्लू था, फेस कॉमिक सेंस था. सेम इसी फॉर्मेटिंग में मुझे लिसन लिखना है. तो अगेन यू विल यूज दिस फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 5, फेस इक्वल्स टू कॉमिक सेंस, Comic. ठीक है. देन कलर इक्वल्स टू ब्लू. क्लोज द फॉन्ट टैग ब्रैकेट, देन टाइप द टेक्स्ट. लिसन. After typing the text, what should I do? What should I do after typing the text? जिसको अप्लाई करना है, ये फॉन्ट फॉर्मेटिंग दे दी, BR text then टाइप कर लिया. अब क्या करना है? and then Close the BR and font close tag. font tag. Close the font tag first, then use the BR. Close the font tag, then give BR. What is the full form of BR? Break Break line. line. No. line. Line. Break line. Line break. Line break. BR की full form line break. Line break is the full form of BR. हाँ जी, क्लियर है? नाउ लिसन के बाद फिर से आपको नेक्स्ट लाइन लिखनी है. That is while others are talking, and that is again with the font size 4, color white, face Lucida console, and change the line here. You can copy it in notepad. आप notepad में copy कर सकते हो. While others are talking, and you will continue with this formatting, continue with this pattern. पहले ये tag, ये यूज होगा, फिर ये यूज होगा, फिर ये यूज होगा नेक्स्ट आपके स्टडी के लिए. देन ये यूज होगा व्हाइट कलर की लाइन while others are sleeping. फिर ये यूज होगा प्रिपेयर के लिए,
and again this will be used while others are daydreaming. Again, act, blue color, size 5, face, Comic Sans. Again, white color line while others are thinking. Again, this one. Okay, you can copy paste it again and change the words. आपको सिर्फ बीच वाला word listen, play, study, prepare, act इसको change करना है, सिर्फ इसको change करना है, बाकी आपका same format रहेगा. After that, last line is with best wishes. For that we are giving font size 4, face, Comic Sans and font color green. क्या use करें? Yes, who will tell me now? Arman, Font tag. Nick, can you tell me? अब क्या कैसे use करेंगे? With best wishes, green color, font size 4 and font is Comic Sans. Yes, Arman, Anik, can you give answer? अगर आपको समझ आ गया है तो please unmute yourself and give answer. Navkaran? Yes. Tushar? Font tag. Okay. Yes, Pragati, you can also say the answer instead of typing. Font tag. Size equals to 4. Color equals to green. And face equals to Comic Sans. Close the bracket, type the text with best wishes. After that, close the font tag. Okay. Now next is select the font size 5, face homeward bound and color green. Color red है वैसे for the KIPS team. Color red for KIPS team. Again. BR tag नहीं आएगा? हाँ? BR tag. BR आएगा बेटा. BR हर लाइन के बाद आएगा. ठीक है? Okay. Now again, font color equals to red. Size equals to कितना दिया है? 5. And face is equal to homeward bound. फेस का बेटा स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए जो भी फॉन्ट्स आपके कंप्यूटर में अवेलेबल हैं. अगर स्पेलिंग गलत होंगे तो फॉन्ट अप्लाई नहीं होगा. जैसे होमवर्ड बाउंड में अगर स्पेस है नहीं है ये आपको चेक करना पड़ेगा पहले कि आपके लैपटॉप में आपके कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स अवेलेबल है उसके करेक्ट स्पेलिंग क्या है और स्पेस है नहीं है वो क्या है. जो करेक्ट होगा ओनली देन द फॉन्ट विल बी अप्लाइड. आफ्टर दैट टाइप KIPS team. Close the font tag and last में एक टैग और क्लोज होना है. कौन सा? Center tag. करेक्ट, सेंटर टैग. बिकॉज हमने बिगनिंग में स्टार्ट किया था सेंटर टैग टू डिस्प्ले ऑल द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द वेब पेज. So we will close the center tag in the last. Okay, then after that close body and then close HTML. This will be the coding for the full complete page, web page, which is given on page number 123. First coding was by using the heading tags. Second coding was again and again we are using the font tag. Font tag use कर रहे हैं बार बार so that you can practice the use of font tag. Okay. Any doubt in this tag, font tag में या heading tag में किसी को कोई doubt है? You can ask. Anyone?